Hello, dear students. I am Dr. Govind Saraswat, and today we will discuss a form of poetry that is elegy. First of all, we will discuss what do we mean by an elegy. Then we will talk about its various types and some of the famous elegies written in the history of English literature. First of all, let's discuss what do we mean by an elegy. An elegy is a special kind of lyric. A lyric expresses the emotions of the poet, and the elegy is an expression of the emotions of sorrow, woe, or despair. In short, the elegy is a lament, a lyric of mourning, or an utterance of personal bereavement and sorrow, and therefore it should be characterized by absolute serenity of emotion and expression. एलिजी एक शोक गीत होती है। गीत हमने पहले एक लेक्चर में लिरिक के बारे में बात की थी। लिरिक का मतलब गीत होता है। गीत सब्जेक्टिव होगा। पोइट अपने खुद की इमोशंस के बारे में लिखता है। इमोशंस वो बहुत ही स्पॉन्टेनियस होती है और उनमें एक सिंसियर अप्रोच होता है। वो हार्ट फेल्ट इमोशंस के बारे में लिखता है, तो वो लिरिक है। तो जैसा कि शुरुआत में हमने चर्चा की कि एलिजी एक स्पेशल काइंड ऑफ लिरिक है। स्पेशल क्यों? क्योंकि इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो उसे बाकी लिरिक से अलग बनाती हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर जो एक एलिजी को बाकी लिरिक से अलग करती है वो ये है कि ये एक शोक गीत है। जैसे अ, इस एलिजी में जनरली जो इमोशंस पोएट एक्सप्रेस करता है वो दुख से या फिर निराशा से इनसे जुड़ी भी होती है। और कई बार उसका पोएट का पर्सनल सॉरो हो सकता है ये, या फिर कई बार कुछ ऐसे एलिजीज भी हैं जो पर्सनल से आगे जाकर यूनिवर्सल वे में जो मॉर्टेलिटी है ह्यूमन बींग्स की या फिर जो डेथ है, डीके है, इनके बारे में इन जनरल वे में लिखा जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट डू वी मीन बाय एन एलिजी। In common use, we can see that it is often restricted to a lament over the dead, but that is an improper narrowing of its meaning. कई बार क्या होता है कि कई बार इस टर्म को, एलजी को सिर्फ और सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की डेथ के डेथ के साथ जोड़ दिया जाता है कि ये उसकी डेथ के ऊपर जो विलाप करते हैं उसके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। ये इसकी मीनिंग को थोड़ा सा और ज़्यादा नैरो कर देता है। देर आर लैमेंट्स ओवर प्लेसेस, ओवर लॉस्ट लव, ओवर द पास्ट, over the over an individual's misery or failure. There are laments over departed pet animals and so forth. And there are many more things about which one can express his grief. तो लैमेंट जो है वो पुरानी जो भी चीज़ें हैं जिनके साथ आप जुड़े हुए हैं उनकी लॉस के साथ में भी जुड़ा हुआ होता है। जैसे आप कहीं किसी जगह पे आप पहले रहते थे, अब वहाँ पे नहीं हैं, तो आप नॉस्टैल्जिक फील करके भी उसके बारे में लिख सकते हैं। हो सकता है कि आपकी पुराना प्यार जो है, जो अब नहीं है आपके साथ में, आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। पास्ट जो आपका है, जो कि अब अब आपको और ज़्यादा याद आता है, क्योंकि बिकॉज देयर इज़ अ कंपैरिजन एंड यू फील दैट देयर इज़ अ लैक ऑफ सो मैनी थिंग्स एट प्रेजेंट, है ना। तो ह्यूमन मिजरी, फेलियर और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेके विलाप किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि एलर्जी को किसी पर्टिकुलर आदमी की डेथ के साथ में जोड़ के नहीं देखना चाहिए, बिकॉज़ ये एक आयाम है उसका, एलर्जी की डेफिनेशन का। इन जनरल वे में हम कह सकते हैं कि एलर्जी की जो मुख्य प्रकृति है वो हो सकता है कि किसी की
डेथ के ऊपर लिखी जाती है, लेकिन जनरली ये उससे भी आगे जाके यूनिवर्सल वे में जो भी लॉस है, जो भी डेस्पेयर है, जो भी आ, हमने अपनी लाइफ में खोया है, उसके बारे में भी एलिजीज लिखी जाती हैं। तो ये एक स्पेशल लिरिक है एलिजी। चलिए बात करते हैं इसकी अलग अलग types की. There are various types of allergies, but broadly speaking, we can say that first of all, that there is a type which is known as personal allergies. Personal means इसमें क्या होता है कि जो भी एक्सप्रेशन है ग्रीफ का, वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति की डेथ को लेके, जो कि पोइट से जुड़ा हुआ था, उसकी याद में जो लिखी जाती है, वो पर्सनल एलर्जी कहलाती है। जैसे टेनिसन ने इन मेमोरियम लिखा। इन मेमोरियम जो उसकी एलर्जी है, वो उसने अपने फ्रेंड की डेथ के ऊपर लिखी थी, आर्थर हेलम। बहुत लेंदी एलर्जी है। टेनिसन ने शायद 17 साल लगा दिए, वो और लिखता गया, और चीज़ें जुड़ती गई। इस तरह से एक बहुत लेंदी एलर्जी जो है उसने आर्थर हेलम की याद में लिखी। मैथ्यू अर्नल्ड ने रग्बी चैपल लिखा। वो अपने पिता की डेथ की को ध्यान में रखे, मतलब उसको लगा कि मतलब आई शुड एक्सप्रेस माई सेंटिमेंट्स फॉर माई फादर। देन उसने क्या किया कि अपने फादर की डेथ के ऊपर उनको याद करते हुए एक शोक गीत लिखा, जो रग्बी चैपल नाम से फेमस है। सो पर्सनल एलर्जीज आर the subjective lament of the poet over the death of someone very near and dear, maybe a friend or relative, or maybe within in the compass of blood relation. So, keeping in mind this matter, we can say that personal allergies जो होती हैं, वो पोइट तब लिखता है जब उसके किसी नियर एंड डियर फ्रेंड, रिलेटिव, या उसके परिवार के किसी सदस्य की जब मृत्यु हो जाती है, तो उसकी याद में वो जो लिखता है वो पर्सनल एलर्जी कहलाती है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया अभी, पहला इन मेमोरियम टेनिसन ने लिखा था, और रग्बी चैपल मैथ्यू अर्नल्ड ने लिखी थी। फिर आता है जो पर्सनल से भी परे जाती है, यूनिवर्सल टाइप की जो एलर्जी होती है। एंड द वेरी there is a very famous example of this type, which is also prescribed in the syllabus of various universities, that is Elegy Written in a Country Churchyard by Thomas Gray. ये इंग्लिश लिटरेचर की जो बेस्ट पोएम्स हैं उसमें से एक मानी जाती है। यहाँ पे जो ग्रीफ या जो डेस्पेयर है पोएट का, वो किसी एक व्यक्ति को लेके नहीं है। थॉमस ग्रे इन ए वे इज addressing this lyric, or this lyric of sorrow, woe, despair at the death of those people who are rustic, who are unknown, who died in obscurity, and they were not given equal opportunities to prove their worth. Okay, so the rude forefathers of the village. So it is a magnificent and complex work of art, dignified and solemn in tone, and not an expression of personal grief. So these are the two important types of allergies: personal and universal. When we read Thomas Gray's Allergy Written in Country Churchyard, we feel that he has used uh, a very simple language, but that simple language expresses a message that has universal value.
Nobody in this world thinks about thinks about those who are unknown, who are obscure, who were not given any chances. But Thomas Gray is thinking about their capacities. What could have been the possibility if they were given any chance? So um, he has given some examples that some mute inglorious Milton, or some Cromwell. These are the famous uh, characters or persons in the history of English literature. But he says that there might have been some person who who might have same caliber or same type of capacities, but since they were not given any opportunity, they could not actualize their dreams. And the elegy has a message for those who who feel arrogant because they have money, because they have knowledge, because they have beauty. There is a line in the elegy that gives us the real essence of our life. That is, the paths of glory lead to the grave. So uh, why do we make a show of our beauty, our power, our influence, or our knowledge? So Thomas Gray, in a way, is trying to give us a thought to understand what life is and how should we treat the other human beings. Then there is another type, that is the pastoral elegy. It is also a type of elegy, spatial in itself. The word pastoral comes from the Greek word pastor, which means to graze. So, pastoral elegy is an elegy in which the poet represents himself as a shepherd, mourning the death of a fellow shepherd. तो ये ग्रीक वर्ड है एक पास्टर, उससे लिया गया है, जिसका मतलब होता है चराना। तो इस तरह की एलिजी में क्या है कि पोइट खुद को एक चरवाहे के रूप में देखता है, और वो क्या कर रहा है, वो अपने एक साथी जो उसके साथ में शायद हो सकता है भेड़े या अदर एनिमल्स को चराने जाता था, उसकी डेथ को वो लैमेंट करता है, उसके ऊपर विलाप करता है। The form arose from the ancient Greeks, Theocritus सबसे पहले इन्होंने लिखनी शुरू की थी। देन लेटिन में वर्जिल ने, और इंग्लिश लिटरेचर में तो मान के चलिए बहुत फेमस एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे, जैसे स्पेंसर की एस्ट्रोफल, मिल्टन की लिसिडस, शेली की एडोनिस, अर्नल्ड की अर्थारसस. These are the most notable examples of pastoral elegy in English language. And शैली की एडोनिस तो बहुत फेमस है, स्पेंसर ने स्टेंजा में लिखी गई है. देर आर 55 स्टेंजाज. शैली हियर इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ पर्सनल एलिजी. पर्सनल भी है, पेस्ट्रल भी है, दोनों एलिमेंट्स इसमें आपको मिलेंगे. इन दिस एलिजी शैली mourns the death of John Keats. They were close friends, and because of the sudden death of John Keats, Shelley was grief stricken, and then he uh, paid his tribute to John Keats. And in a way, somewhere he targeted those who were responsible for the death of John Keats. So these are the various examples of elegies in the history of English literature. We have discussed the definition, what do we mean by elegy, then some of the types along with the examples. In the 20th century, there are poets who wrote elegies like W.H. Auden, and then he wrote an elegy on the death of W.B. Yeats. So
This is all about allergy. I hope that this will be very useful for you, and uh, you will understand Thomas Gray's allergy, keeping in mind the concept that has been suggested or discussed in this lecture. Thank you.